अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे पाकिस्तान से ज्वाइन किया अरीबा शाहिद ने, जो सेंट्रल बैंक कवर करती हैं प्रॉफिट मैगजीन के लिए, स्टॉक मार्केट वगैरह भी देखती हैं। अरीबा जो है वो काफ़ी गहरी नज़र रखती है सेंट्रल बैंक पे। और अभी आपको पता है रिसेंट डेवलपमेंट, रजा बाकिर साहब जो गवर्नर थे, अब नाउ एक्स गवर्नर, उनका टेन्योर पूरा हो चुका है। तो हमने सोचा है कि इस पर एक डिस्कशन कर लें कि 3 साल वैसे बड़े इवेंटफुल 3 साल थे। रजा बाकिर साहब ने मेरा नहीं ख्याल कि रेस्ट किया होगा बिल्कुल भी। बहुत कुछ होता रहा इन 3 सालों में, बट विल हैव अ डिस्कशन कि क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस की इन्होंने, किस तरह से रिस्पांस दिया, जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हुए, और ओवरऑल कैसा रहा उनका टेन्योर। हु इज गोइंग टू बी द न्यू गवर्नर? The next governor in line, जो as per sources है, that his name is Dr. Asim Hussain, and वो भी IMF के हैं, and he's been at the IMF, roughly joined the IMF the same time as Mifta Ismail joined the IMF. अभी टेम्परेरी जो गवर्नर अभी उन लोगों ने रखा है वो है मुर्तजा सैयद, who is deputy governor. So for the time being, he's acting governor of the state bank. तो ये चल रहा है. डॉक्टर आसिम हुसैन की chances हैं most likely to join as governor state bank. So another IMF employee will be quitting his job to join the State Bank of Pakistan. अच्छा, ये IMF रेफरेंस लगाना, आई थिंक इट कैन गो आइदर वे। आई जस्ट वांट टू पिक योर ब्रेन्स ऑन दैट कि अगर कोई IMF का बैकग्राउंड रखता है, IMF की जॉब छोड़कर आया है, तो ये दोनों तरह से भी हो सकता है। लाइक कि पाकिस्तान के फेवर में भी जा सकता है, क्योंकि वो IMF की इनर वर्किंग को बेहतर समझता होगा, उसको पता होगा उनका माइंडसेट क्या है और कैसे उनके साथ नेगोशिएट करना है। ऑन द फ्लिप साइड इट कैन ऑल्सो बी सॉर्ट ऑफ वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान इन द सेंस कि आप जो है थोड़ी ज़्यादा IMF की तरफ आपका टिल्ट हो और आप उतनी क्या कहते हैं, टफ नेगोशिएशंस ना करें। वैसे तो हमारी पोजीशन नहीं होती टफ नेगोशिएशंस की, क्योंकि हम लोग रिसीविंग एंड पे ही होते हैं, लेकिन स्टिल ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करें, ज़्यादा ग्राउंड कंसीड कर जाएं। तो आपका क्या टेक है रजा बाकिर के हवाले से? आपको लगता है, बिकॉज वी डोंट वांट टू So गो इनटू के ये कोई कंस्पिरेसी थी, बट अगेन कि IMF का बैकग्राउंड होना बेहतर रहा है इस रजा बाकिर के मामले में, या फिर कोई फायदा नहीं हुआ खास? so there are two ways to look at this. One is usually जो IMF programs जो होते हैं उसमें जो terms होते हैं या जो उनके suggestions या जो उनके clauses होते हैं या the things that they want us to act on, if we look at them carefully, बहुत सारे उनमें से चीजें जो होती हैं वो ये होती हैं जो हमारे मुल्क के फायदे के लिए होती हैं. Maybe not in the short run, maybe has like implications in the short run, but long run में बहुत बेहतर होती हैं. तो वो वाली चीजों की जो फायदे होते हैं they outweigh themselves in the long run. और वो ऐसी चीजें होती है जो politicians करना नहीं चाहते, because again short run में it goes against them and then they have problems getting votes. So इसकी in that मिसाल situation, आई थिंक एक्सचेंज रेट रिजीम हो सकता है कि पहले हमारा मैनेज था, फिर exactly फ्री फॉल पे छोड़, exactly और पॉलिटिकली वो exactly डिसीजन इसहाक डार साहब उसको हाँ सेल करते रहे और इनके अगेंस्ट किया इस गवर्नमेंट के। exactly. तो ऐसी चीजें जो है are examples of this. तो one thing तो ये हो गया. दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो for instance I work in the media, you worked in the media, you work in the media, right? हम लोगों की career ऐसे होती है कि we work in the media and then maybe after some time we sit on the other side of the table और हम corporate communications join कर लेते हैं. A lot of journalists in the business sector have done this. तो इसका मतलब when you change sides on the table, it doesn't mean कि your loyalties lie with the previous employer. For instance, if I'm working as a business journalist और एक साल के बाद मैं कोई MNC की corporate communications join करूंगी, तो my loyalties will not lie with the media, my loyalties will lie with where I'm working. Similarly, if you're working for the IMF and you quit your job and now you're working as a governor state bank, आपकी loyalties will lie where you're working now. Of course, over the years you've understood the fund's perspective, तो आपको भी समझ आता है कि जो fund कह रहा है इस मुल्क को करने के लिए, that is good for the country. And government, और फिर हम लोगों को जो लग रहा होता है कि they don't negotiate, so probably हमें इसलिए लग रहा होता है because the government does not support that decision. So for instance, जो पाकिस्तानी रुपये की devaluation हुई थी, जो depreciation नहीं, sorry, devaluation हुई थी during 2019, उसको जो है a lot of governments in the past would not have supported it. तो इन सारी चीजों को देखते हुए I don't really see the harm in it. However, of course, अगर कोई governor के तौर पर आ रहा है, their first priority and the first loyalty will lie with the country, because I'm assuming कि अगर कोई fund की job छोड़ के governor की position पे आ रहा है, तो they know that they're not just doing another job, they're actually serving the country. So it's a twofold thing. So I don't really see the conspiracy there. And सबसे मजे की बात यही है, the opposition,
which includes the people, मतलब पिछला जो opposition था, which included people ना from वो भी parties IMF of का the एम्प्लॉय लेकर आ रहे हैं। वो PTIMF कहते थे, वो रजा बाकिर को एजेंट बाकिर कहते थे because वो अब IMF से वो आया भी ना, IMF तो से ही ये लेकर आ समझ, रहे हैं। हाँ। तो वही वाली बात है, when you call someone an agent or when you make fun of the IMF or someone from the IMF and make this into a whole conspiracy theory, that's just because आपके पास असल में उस बंदे के ऊपर कोई valid criticism नहीं है. You cannot say that that person is incompetent. You cannot say that that person isn't qualified for the position. आप उसकी कोई बुराई नहीं कर सके, तो आपने जो है ना एक ही बुराई मिली है हाँ, आपको बस कि वो कुछ ना कुछ IMF ढूंढ का है. लेना है कि ना कहीं जो है कुछ ना कहीं गुम कर रहा एग्जैक्टली. तो अब वो खुद IMF के बंदे को लेके आ रहे हैं. अब मजे की बात अब देखने की होगी कि अगर PTI वाले भी बोलेंगे कि आप एजेंट लेके आए, बिकॉज पॉलिटिक्स इज सो वियर्ड कि anyone can say anything, and even the smartest people, even the people that went to the business school, वो भी ऐसी फजूल बातें कर सकते हैं. तो if the बिल्कुल बिल्कुल। PMLN नहीं, People's अब तो Party जो opposition said this, so I'm not going to be surprised if anyone else टेंड टू does एग्री। too. जो सोशल मीडिया पे हम लोगों की जो एक्सचेंजेस देखते हैं उससे तो अंदाजा होता है कि एजुकेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ गए। एट द एंड शऊर जो है, Political political हाँ, rhetorics है. आप पॉलिटिकल ऑपोजिशन में इंक्लिनेशन होंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ और बोलेंगे, जहां हुकूमत पे आएंगे आप अपने आप को, मतलब it's I यस, wouldn't count the conspiracy theory, no. ठीक है। अच्छा अरीबा, आपने डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों टर्म्स यूज की। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट को फॉलो करते हैं, जो इकोनॉमिक जर्नलिज्म को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली फॉलो करते हैं, उनको तो आइडिया होगा, बट बहुत सारे लोगों को इनका फ़र्क नहीं पता। अगर इसको थोड़ा सा आसान करके समझा दें कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है। तो जब मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट होता है, तो मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड सप्लाई की वजह से अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है रुपये के मुकाबले में और रुपये की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं. ये ठीक मार्केट है। फोर्सेस कहते हैं. डीवैल्यूएशन इज जबरदस्ती किसी चीज की कीमत कम करना, या वो तो रुपये की वैल्यू को डीवैल्यू किया गया. इट वाज ब्रॉट डाउन बिकॉज रुपये ओवर वैल्यू था. तो उसको मार्केट ओरिएंटेड लेवल पे लाने के लिए what they did is they devalued it. तो अच्छा, इस पे 2019 में devaluation हुई थी. जी जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। इसमें हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं? फॉर एग्जांपल, हमें ये तो आइडिया है कि जब हुकूमत चेंज हुई थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत आई थी, उस वक्त रुपये को डी वैल्यू किया गया था क्योंकि वो महंगा था। लेकिन कहाँ तक था? क्योंकि कुछ लोग कहते 25% है, कुछ 15% भी कह रहे थे, 20% भी कह रहे थे। तो अगर उस वक्त आई थिंक 124-25 का था जब ये हुकूमत आई थी, बट बहरहाल हुकूमत से हम भी लिंक करते हैं, रजा बाकिर साहब आए थे उस वक्त, शायद 30s में चल रहा था या 40s में, आई एम नॉट रियली श्योर। बट अगेन वहां से फिर ये अब 180 और हाई 80s तक भी गया है। क्या ये सारी की सारी डीवैल्यूएशन थी या ये डेप्रिसिएशन? रजा बाकी के आने के बाद एक वेव ऑफ डिवैल्यूएशन हुई थी जो हुकूमत ने सपोर्ट की थी. इवन दो सेंट्रल बैंक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट होता है, बट द गवर्नमेंट सपोर्टेड द डिसीजन टू गो फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी. देन कोविड हिट. सही, अब कोविड हिट तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो करेंसीज है, दे ऑल टुक अ हिट. रुपी उसके बाद थोड़ा और प्लंज हुआ, और आपको याद होगा जब कोविड हिट हुआ था तो बातें चल रही थी मार्केट में कि 180 तक रुपी जा सकता है. ऐसे तब बातें भी हुई थी. लेकिन 180 तक नहीं गया था. रुपी जो है गिरने के बाद फिर उठने रिकवर हुआ रुपी, और थोड़े दिन तक मुस्तहकम रहा. थोड़े दिन का मतलब कुछ महीने तक मुस्तहकम इनफैक्ट रहा. नीचे आ गया था, हाई 60s में जाने के बाद 152-3 तक भी आ यस. गया था। फिर रिसीड हुआ था. रिसीड होने के बाद इट स्टेड स्टेबल फॉर रिलेटिवली नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम. उस टाइम के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी ग्रो हुए थे. Things had improved on the macro external front. Reserves भी strong हुए थे उस टाइम पे. फिर हुआ ये कि जो अफगान इशू हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से बहुत सारे डॉलर्स अफगानिस्तान मूव हुए, और उसके अलावा जो और मैक्रो फ्रंट पे जो इश्यूज चले थे, हमारी इंपोर्ट्स राइज होने लगी, कमोडिटी प्राइसेस ग्रो होने लग गए. उसके बाद रुपये अब फर्दर डिक्लाइन कर रहा है, और ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव इनफ रिजर्व्स एज वेल. तो माइनर क्या कहते हैं, वो होती तो है इंटरफेरेंसेस और इंजेक्शंस, माइनर इंजेक्शंस होती हैं, बट देन it's not enough to like bring it down. So the rupee right now is market oriented, लेकिन स्टेट बैंक has said कि जहां जरूरत पड़ेगी हम मार्केट के अंदर we will हम स्टेप इन करेंगे. अच्छा, लेकिन उसमें भी नेट, मतलब एक क्वार्टर के अंदर जितना वो इंजेक्ट करते हैं उतना उनको निकालना भी होता है, तो नेट इफेक्ट जीरो होता है. अभी आपने इंटरवेंशन की बात की कि स्टेट बैंक कहता है कि जब डिसऑर्डरली कंडीशन हो तो हम इंटरवीन करते हैं। अच्छा, अगर हम स्टेट बैंक का कोर मैंडेट देखें तो उसमें फाइटिंग इन्फ्लेशन एक आ जाता है, फिर आपका एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट आ जाती है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जो इंटरेस्ट रेट है। ये तीन मेरे ख्याल में ब्रॉड फंक्शन है स्टेट बैंक के। और अगर मैं गलत नहीं, मुझे करेक्ट कीजिएगा। दूसरी चीज़ के
अगर हम इन तीनों की बात कर ली जाए तो इस पे आपके ख्याल में कैसा रजा बाकिर साहब ने परफॉर्म किया और कैसी उनकी इंटरवेंशंस थी? सेकेंडली, जो उन्होंने ट्वीट किए जाते हुए उन्होंने अपनी कुछ अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट किया है, अगर आपने भी पढ़ा होगा, और नो डाउट काफ़ी उन्होंने चीज़ें की हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट है, रास्त उन्होंने लॉन्च किया, उन पर भी हम बात करेंगे। तो मुझे दोनों साइड से बताइएगा कि एक तो जो उनकी ट्वीट्स में उन्होंने जिन जिन चीज़ों का बताया, टर्फ स्कीम भी लेकर आए थे कोविड रिस्पॉन्स का, वो आप किस तरह देखती हैं एज अ रिपोर्टर के कितने मेजर्ड इंटरवेंशंस थी और किस हद तक उसका फायदा हुआ इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में? और दूसरी तरफ जो कोर फंक्शंस थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि जो मकसद होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी को शॉक ना लगे। और इस वक्त आप किसी से भी जाके पूछेंगे पाकिस्तान में तो तीनों एरियाज में इन्फ्लेशन में भी शॉक लगा है लोगों को, डॉलर रुपी पैरिटी के अंदर भी लगा है, और मॉनेटरी पॉलिसी रेट में भी आपने देखा एकदम से अब्रप्टली 2-3 दफा ऐसा हुआ, शायद 2 दफा तो हुआ एटलीस्ट, इमरजेंसी बेसिस पे आके, और बड़े बड़े उनको इंटरेस्ट रेट कट करने पड़े। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन को लेके चलते हैं। अगर हम देखिए तो शुरू में जब 13.25% हमारा इंटरेस्ट रेट लाया गया था, तो there was a lot of you know noise about hot money coming into the country. ये hot money stunt था उनका. And that was also because पाकिस्तान में जो inflation थी वो money supply driven इतनी नहीं थी जितनी supply shock driven थी. So it was the equivalent of bringing a knife to a gunfight. तो वो एक issue था. But then moving forward, जब COVID आ गया था, so the state bank took up a number of measures to control the harmful effects of the pandemic. And of course, COVID was such a situation जो कोई guidebook में नहीं था, कोई handbook में भी नहीं था, किसी central banker के दिमाग में भी नहीं था कि क्या करना है. अब वो जिस तरह से बाहर की दुनिया में quantitative easing होने लगी थी, Pakistan does not have, the assets or the means to do massive quantitative easing to flush liquidity into the market. तो स्टेट बैंक ने काफी चीजें की. उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो कम किया बैंक्स का, ताकि बैंक्स वुड लेंड आउट मोर. उन्होंने टर्फ लेके आए सो दैट पाकिस्तान वुड बिकम मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड. उन्होंने ले ऑफ्स रोकने के लिए लोन्स दिए. उन्होंने कहा अच्छे खासे impactful measures निकाले, which over time these measures were of course थोड़े से inflationary because इनसे money supply आपका मनी grow सप्लाई हुआ. बढ़ गई थी, बट But रिकवरी भी then हुई, आई थिंक again, वी शेप रिकवरी हुई हमारी। yes, हमारी काफी drastic recovery हुई. The central bank massively cut down interest rates to 7%. Reza Baqir was known as one of the most aggressive central bankers in the world. हाँ, पर एट द सेम So टाइम शुरू में शायद उन्होंने ऐसा भी तनकीद आई थी कि उन्होंने बहुत थोड़ा सा टाइम लगाया रिस्पांस देने में, क्योंकि कोविड ने ऑलरेडी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे और हम ऊपर ही बैठे हुए थे 31 के। जो पहला कट था वो भी चंद बेसिस पॉइंट्स का था, और so आई the थिंक बहुत the ज्यादा। pehla so the pehla cut was basically under the circumstances कि उस वक्त, I mean, when the pandemic started, people like you, people like me, people who aren't like even the medical professionals, they did not know how long this would last. I think जब शुरू में COVID आया था तो हम लोग ये सोच रहे थे, मार्च की बात थी, तो we were like यार जून तक तो सब सही हो जाएगा. So एक तो ये चीज, ऊपर से IMF ने बोला हुआ था रियल इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन रखने के लिए. हाई इन्फ्लेशन थी अराउंड 11 to 12% ऐसा कुछ था, और इंटरेस्ट रेट्स हमारे 13.25 थे. उस महीने 14% भी इन्फ्लेशन जाने का चांस था. तो probably because of the IMF conditions of maintaining real interest rates, वो जो कट था वो वो it had to be approved, or it had to like उनको IMF या कोई अपने terms बताने पड़े होंगे या कुछ करना होगा. So probably the first step was a little cautious, and उसके बाद drastic steps आने लग गए थे in the interest rate. So these steps at that time when these decisions were made, उस वक्त जो है उनको भी नहीं पता था कि एक पैंडेमिक कितने दिन तक चलेगा. आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था. But at that time it made sense. I remember the last year हमारी negative growth थी, फिर 4% growth जो आई, which is it's quite remarkable, especially during a pandemic, especially क्योंकि export growth के साथ आई. तो the economy was well managed in that sense. However, state bank के जो inflationary aspect है वो ये है कि थोड़ी सी consumption driven growth इन लोगों ने काफी encourage किया था during their time. So for instance, just the Roshan Digital announced किया. The Roshan Digital is a great initiative because it helps connect the international, Pakistani residents to the country. And एक दफा ये establish एक link हो जाती है तो it's easier to do everything related to transactions in Pakistan. तो ये link उन्होंने एक दफा ये link establish कर दिया. However, इस
थोड़ा सा inflationary moves, जैसे रोशन अपनी कार स्कीम was inflationary because वो consumption driven growth है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक ग्रे मार्केट भी बना रही है. फिर जो इनके हाउसिंग स्कीम्स और ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पैकेजेस हैं, those are also in a way inflationary in the sense that these are non-productive assets. तो थोड़ी सी कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ होने लग गई थी, मनी सप्लाई एक्सेस हो गया था मार्केट में, जिसकी वजह से नवंबर में द स्टेट बैंक ब्रॉट डाउन द कैश रिजर्व रेशियो, सॉरी इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, जिसकी वजह से बैंक्स नाउ हैड लेस मनी टू गिव आउट. एंड कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने के बाद एकदम से रेट हाइक के ऊपर रेट हाइक करने लगे थे नवंबर से. नवंबर टू दिसंबर रेट हाइक्स काफी होने लगे थे, सरप्राइज रेट हाइक्स भी हुआ था. उन्होंने एक हफ्ते पहले बुला लिया था एनपीसी को, एंड देन उसके बाद दे गिव इट अ पॉज कि हम सिचुएशन असेस करेंगे, हमें और रेट हाइक्स की जरूरत है या नहीं है. एंड देन उसके बाद अभी दोबारा से उन्होंने सिलसिला शुरू किया. बट द सेंट्रल बैंक हैज टेकन, यू नो, पोस्ट कोविड इट्स टेकन अ वेट एंड वॉच अप्रोच, जो थोड़ा सा स्लो लग रहा है. बट आई वुडंट रियली क्रिटिसाइज देम बिकॉज एक वो, because they had the ability to make the most of whatever leeway they had under COVID, so they wanted to encourage growth as much as possible. However, इससे थोड़ा boom bust cycle का बन सकता है. I'm glad you mentioned that boom and bust cycle. दो तीन follow up question. I was patiently listening to you. मैंने कहा फिनिश कर लें. मुझे ये बताएं कि एक तो हमारे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का कोई टारगेट है डिफाइंड, जैसे यहाँ यूके में है बैंक ऑफ इंग्लैंड 2% टारगेट करता है, यूएस में फेडरल रिजर्व है वो भी 2% टारगेट करता है, और फिर वो उसी के अराउंड पॉलिसीज बनाते हैं. पाकिस्तान में मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई डिफाइंड टारगेट है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है. वो पीरियोडिक टारगेट जरूर बता देते हैं, लेकिन एक होता है ना मैंडेटेड, सॉरी लॉन्ग टू मीडियम टर्म. हाँ वही लॉन्ग टू मीडियम, लेकिन एक डिफाइंड टारगेट होता है ना कि यार पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए 6% या 7%, ऐसा कुछ नहीं, तो कोई ऐसा टारगेट है या नहीं. दूसरा ये कि मुझे बताएं कि जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट रही है रजा बाकिर साहब की तरफ से, आपको लगता है कि ये बिकॉज एक तरफ ठीक है एक्सचेंज रेट उन्होंने बढ़ाए, सॉरी एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखा टू सॉर्ट ऑफ कंटेन इन्फ्लेशन, बट एट द सेम टाइम ये जो आपने जिक्र किया रोशन डिजिटल स्कीम और कंस्ट्रक्शन पैकेज और अपना घर रोशन डिजिटल के अंदर इन्होंने जो कार की स्कीम भी दी, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशनरी थे. प्लस क्या ये सारे के सारे जो है इसमें स्टेट बैंक आप समझती हैं कि लीड कर रहा था, या फिर कुछ पॉलिटिकल साइड पे इससे भी प्रेशर था, लाइक स्पेशली हमने लास्ट बिल्कुल उसमें देखा उनके मंथ्स में कि शौकत तरीन और रजा बाकिर लग नहीं रहा था कि सेम पेज पे. फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो शायद ग्रोथ को पुश करना चाह रही थी, रजा बाकिर साहब जो है वो ग्रोथ को रोकना चाह रहे थे. कुछ स्टेटमेंट्स भी आए एक दूसरे के इनडायरेक्टली अगेंस्ट. तो किस हद तक आप समझती हैं कि ये जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है इन्होंने इंडिपेंडेंटली कंट्रोल की है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या, जो क्योंकि सबको पता है इन्फ्लेशन ने जो हाल किया हमारा अगेन लास्ट कुछ मंथ में, ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक कमोडिटी सुपर साइकिल थी वो भी रिस्पॉन्सिबल रही है, पर एट द सेम टाइम जो उससे पहले भी अगर आप देखें तो डबल डिजिट और उसके आसपास ही चल रही थी. तो कैसे देखती हैं, और अगर इनका अपनी तरफ से सही था तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए जो इनका काम मुश्किल हो गया? So for target, no, not that I know of, but I might be wrong. So if I am wrong, I will check this after this. But I don't think there's a target, because अगर target होता तो MPC में mention करते और वो कहते. But they do mention कि long to medium term में inflation will taper down. इस तरह से वो कहते हैं. However, they don't tell you how long the long to medium run is. तो एक ये बहुत interesting बात है. अच्छा, दूसरी बात है, when you talk about inflation, तो पहली जो हमारी inflation पाकिस्तान में मसला ये आया अभी for the past 3 years, जो PTI गवर्नमेंट को भी बहुत मसला हुआ कि इन्फ्लेशन का जो मसला था वो ये था कि for the past 3 to 4 years, 3 years, inflation has been persistent. Inflation recede नहीं हुई है to like 4 or 5% in the past 3 years. तो इसका ये हुआ है मसला कि लोगों को इन्फ्लेशन के जो प्रेशर है वो persistently फील होते होते their purchasing power has been wiped out, जिसकी वजह से the opposition was able to oust the government because थोड़ा सा resentment को उन्होंने फायदा उठाया. And the reason for the persistent inflation is that for the first year of, let's say, Reza Baqir standards, so अगर हम उसके हिसाब से देखें तो for the first year there was a supply shortage driven inflation issue. उस वक्त शुगर शॉर्टेज आई, आटा शॉर्टेज आया, तो वो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन had gone up. और ये persistent inflation रही for 3 years, जिसकी वजह मतलब जहाँ पे इन्फ्लेशन around 3 to 4% तक नहीं गिरी. तो what happened is that in ये persistent inflationary environment में एक आम बंदे का जो purchasing power है वो काफी diminish हुआ.
अच्छा, the second wave was because of COVID की वजह से inflationary तो इतना नहीं था, but obviously एक supply shortage driven था, और फिर internationally भी issues होने लगे थे. But at that time we were we were able to benefit from low petrol prices. The third wave of inflation that's happening right now is monetary supply driven, क्योंकि money supply थोड़ा grow हो गया था, but more importantly is also commodity driven. The commodity prices around the world have increased rapidly. Petroleum products have grown, prices have gone up significantly. Palm oil or ये सारे commodity prices have also gone up significantly. तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी जो inflation आ रही है वो काफी ग्रो हुई है. अच्छा, अच्छा अगर अरीबा, इस एक मिनट, कॉस्ट सॉरी मैं आपको यहाँ एक मिनट रोकूंगा. मतलब इसका तो मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई भी स्टेट बैंक गवर्नर आ जाए, कितना भी काबिल आ जाए, हम जब तक अपनी ये जो हमारी फ्रेजाइल सप्लाई चेन है, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है हमारी ओवर इंपोर्ट्स, इसको जब तक हम नहीं काउंटर करेंगे ये प्रॉब्लम तो रहेगा. डू यू एग्री विद दैट? Of course, because like I said, interest rates is internationally in growing prices commodity cycle में अगर हम interest rates अपने बढ़ा भी दें तो उससे जो है like you're not going to see a fall in inflation. So it's again like I said, bringing a knife to a gunfight, because आप interest rates बढ़ाएंगे, आप लोगों की money supply को control भी करेंगे, but sunflower oil, palm oil, एसेंशियल्स है ना, बिल्कुल एसेंशियल्स हैं. आपने और तेल तो चाहिए आपको, आपको ऑफिस जाना है, गाड़ी में तेल डालना है, बिजली के लिए, बिजली बनाने के लिए तेल चाहिए, ये जो चीजें चाहिए. फिर बहुत ज्यादा फूड इंपोर्ट्स भी हम लोग कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल तो खैर होता ही है इंपोर्ट. तो ऑब्वियसली ये चीजें तो ये एक मसला है. हाँ, so these things are really important. तो हाँ, बस ये है कि जो the state bank at this point उसका काम है कि money supply driven inflation को control करना. अब the state bank feels कि उन्होंने जो CRR कम किया है उससे फर्क पड़ेगा, और उन्होंने ये भी सोचा है कि जो अभी policy rates की तरफ वो hike करें तो उससे भी ये फर्क पड़ेगा. However, जो policy rate hike होगा उससे भी there will be another wave of inflation, because the cost of borrowing will increase, and when the cost of borrowing increases, businesses will pass this on to consumers. अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से तो इन्फ्लेशन को रोका जाता है, बिकॉज अब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है तो ऑब्वियसली लोग पीपल स्टॉप स्पेंडिंग मनी, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होती, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस नहीं होते. आप कह रही हैं कि नहीं एक और वेव ऑफ इन्फ्लेशन आएगा इसकी वजह से, इसको थोड़ा क्लियर करें, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. एक वेव ऑफ इन्फ्लेशन इस तरह से आएगा कि ऑफ कोर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीजेस द मनी सप्लाई डिक्रीजेस. तो मनी सप्लाई डिक्रीज करने की वजह से इन्फ्लेशन डज कम डाउन. हाउएवर पाकिस्तान के उसमें इफ फॉर इंस्टेंस द बिजनेस इज बोरिंग मनी एंड उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज होगी, तो दैट विल आल्सो पास ऑन टू कंज्यूमर्स, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट as well. So it's not a huge wave of inflation, but there will be some inflationary impact as well. So it's not something huge, but cost of borrowing increase hone se the cost of production and the cost of the money will be passed on to consumers. It depends. This depends on how high the interest rates go. क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि interest rates can go up to around 15%. So 15% is really significant. When was the last time we had this kind of interest rate? I don't remember. बहुत अरसा हो गया. During People's Party Zardari's tenure, I think. 96 के अंदर the highest interest rates were 19%. The monetary tightening cycle, I feel, is not more for people, like for businesses, because businesses don't really benefit. It's more for, pushing the government to be more prudent, because at the end of the day, governments come and go, and they make their policies based on what will get them votes, not what is better for the country in the long run. So the very good thing is that the state bank tenure for governor is now 5 years, which is very forward looking in the sense कि 5 साल तक अगर एक बंदा governor रहता है तो he's going to think long term. And अगर let's say extension नहीं मिलती है तो अगर एक बंदा 10 साल तक रहता है, I'm not encouraging it. But what happens is that a governor's position is to think long term for the benefit of the economy, not for the benefit of a political party. Reza Baqir के ऊपर थोड़ी सी criticism ये हुई थी कि he seemed a little inclined towards PTI. Yeah, he seemed a little politically inclined, because the way the schemes were announced, the way the prime minister was coming in to launch events, and the way he was thanked repeatedly by the governor, that was something that had some, suspicion around, like lots of people question it. However, the policies were still state bank. तो ये तो इनको बेनिफिशियल होना चाहिए था, इनको नहीं एक्सटेंशन मिला. प्लस अगेन आई एग्री कि 3 साल बहुत कम है कोई मेजर पॉलिसी इम्पैक्ट लाने के लिए. तो आपके ख्याल में क्यों नहीं इनको आगे बढ़ाया गया? एक तो I've heard कि one, he did not want to stay.
And that is because, if I managed to save an economy during a pandemic, I would want to leave at a high. Because ab jo hai, we're going You think towards. he is living on a high? I mean, I can come back to that later, but you mentioned that, so No, I mean, yeah, no. When I say he's leaving at a high, I mean the last growth rate that we've seen is 4%. अभी अगला आया नहीं है. और He's पाकिस्तान के he's केस में तो 4% ज्यादा ही होता है. Oh no, that's great for Pakistan. So he's leaving at 4%. He has the COVID legacy behind him. One of the biggest things I will give him credit for is in the startup space. उन्होंने क्या किया कि when the startup when he came in, so he called in all the stakeholders. उनको बुलाया और पूछा आपको क्या चाहिए? Literally straight up asked them what they wanted and then asked for the rationale. And immediately within a year, state bank regulations में changes आए, FX regulations change हुई, the way the state bank operates उसमें काफी changes आए, FATF के मुश्किलात के रहते हुए, and उन्होंने ये किया और ये करते हुए क्या हुआ कि the state bank managed to change the regulations जिसकी वजह से startup boom हमारे मुल्क के अंदर आया. Not really a boom, but like we started getting in money and investors started to feel confident. तो एक सबसे बड़ा initiative उनका ये था कि policy में changes लाने में he did not hesitate. RAST is another one. RAST 2 steps have been rolled out. The next one is coming up. So RAST is a game changer in financial inclusion. फिर the next thing that they did is ये जो financial inclusion हमारे मुल्क में is ना होने के बराबर in the sense कि if we compare ourselves with other countries, the female financial inclusion is minimal. Financial inclusion for lower income groups is minimal. उन्होंने क्या किया कि they looked at it from a very different perspective. Asan mobile accounts, Asan digital accounts, there are multiple types. So you can open up an account from your smartphone, and even if you have a button wala keypad wala phone, उससे भी आप आराम से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. तो उन्होंने कोशिश की है कि और लोगों को बैंकिंग नेट के अंदर लाने की. And then to make that one step forward, they're going forward digital banking licenses, which will help bring in so many people into the financial income net. तो ये भी एक चीज है. फिर other than that, जो ID है, Roshan Digital Account, it's a beautiful way to connect overseas Pakistanis to Pakistan. And like I said before, एक दफा वो connection बन जाता है, तो वो connection से क्या होता है कि now that you know it's easy to send remittances the right way, you are unlikely to do it the wrong way. Now that you have a connection to Pakistan, anytime there is a scheme, just in certificates or whatever, you would be likely to invest. Yeah, but how about the cost of sending money through Russian digital versus the unconventional channels? Is it because लोग तो ये देखते हैं cheap क्या है उनके लिए? यहाँ पर तो overseas Pakistani देख रहे हैं. Roshan Digital is easy. It's easy. And I'm not asking easy or difficult. I'm asking whether it's cheaper. No, and plus, it also has incentives to make you want to use it. Just a loyalty program, you get points for using it. So it's thinking beyond it. So just say we live in a country जहाँ पे paint बिकता है token वाले. So what they've done is they've used the same mentality, and उन्होंने Roshan Digital ने क्या किया incentive दिया है कि when you send in a lot of money using it, you get points. उस points को आप redeem करके आप अपने खर्चे कर सकते हो उस पैसे से. You can pay fees from it. You can, मतलब it's an incentivized way to do it. So they've played with that mentality. So and then plus the notion behind Roshan Digital is कि एक थोड़ा सा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो सेवियर कॉम्प्लेक्स है ना कि हम मुल्क की मदद कर रहे हैं, तो they've played on that sentiment as well. तो थोड़ा सा स्टेट बैंक सेंटिमेंट ड्रिवन भी थोड़ा सा चलने लगा, not just like boring state bank driven. So these are a few things that they've done. And in addition to that, overseas के लिए I think overseas के हवाले से तो जो इनके इक़दामात हैं, I mean obviously जब भी कोई नई चीज आप रोल आउट करते हैं, ग्लिचेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सिस्टम तो पुराना ही है, उसके ऊपर आप नई प्रोडक्ट ला रहे हैं. तो एक बात रोशन डिजिटल के बारे में कंप्लीट करनी थी. हाँ बोलिए. कि रोशन डिजिटल इज अ कंप्लीट डिजिटल वे टू ओपन अ बैंक अकाउंट. ठीक है, जिससे जब वो शुरू भी हुआ था तो हमने यही बोला था स्टेट बैंक ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, सब चीज उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से लिए किया. However, Roshan Digital was the base case कि देखो हम ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं completely ऑनलाइन. उन्होंने ये इससे प्रूव किया, which they are now implementing locally. So they started it off from overseas, a small group of people, and now they're implementing it on a large scale in Pakistan. So that helped banks move into this. So it was a really nice way to go about it. So I actually appreciate the RDA thing. RDA में अपनी car is something I will not endorse ever.
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो इनकी स्कीम्स थी, ऑब्वियसली अब ये जा रहे हैं, कुछ लोगों के कंसर्न्स भी थे कि क्या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से पैसे निकाल लें या नया अपना घर स्कीम का क्या होगा। ये हुकूमत चली गई और ये गवर्नर भी चले गए। डू यू थिंक इट इज़ कम्प्लीटली डी लिंक्ड, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये चलती रहेंगी, देखिए कंसिस्टेंट रहेंगी? देखिए हुकूमतें आती जाती रहती हैं, गवर्नर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पॉलिसीज रहती हैं। सही है। नहीं, सो लेकिन अनलेस अगर द पॉलिसी, पॉलिसीज में शिफ्ट आता है कि पैसा यहाँ नहीं लगाना कहीं और लगाना है, पैसे तो है नहीं हुकूमत के पास, तो क्या कुछ सब्सिडीज जो हैं, डू यू सी देम बीइंग टेकन बैक, क्या they, होगा they, उसका? they can restructure their policies, of course. They can restructure the programs, but not significantly. I don't really think that's going to happen. However, you know, you can never really say anything with certainty when it comes to this stuff. But if a state bank has, because at the end of the day, it's not just like Reza Baqir ne bola ki ye policy laani ye hota hai. State bank ke andar ek pure departments chal rahe hote hain who go through this and who go through every decision, and then they come up with a program after deciding whether it can stay in the long run or not. ठीक है। पॉलिसीज डिसाइड होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस रास्ट जब इन्होंने लॉन्च आउट किया, so RAS is currently under the state bank. However, they have said in their policies that in the future, RAS can then be handed over to a third party um, later on, because central bank managing RAS is not the best way to go या forward. रास का So रिस्पांस कैसा है? हैज इट बीन एक्सेप्टेड RAS एज अ मेन मोड ऑफ पेमेंट? क्या RAS रिस्पांस? RAS response is good. People, so for instance, sometimes now when we're sending money to people, so they go like, "Oh, do you have RAS?" So RAS public rollout is happening. It's happening slow because um कंप्लीटली फ्री banks को भी ट्रांसफर है पेमेंट का, राइट, कहीं भी पाकिस्तान में? completely free है, but उसको थोड़ा सा initiative लेना पड़ेगा banks को to encourage उनके तो customers to उनके तो पेट पे लात मारी है, वो कैसे इनिशिएटिव लेंगे? वो तो उन्होंने ढाई वो रुपए तो अभी एटीएम कार्ड की रसीद लगाने की फीस बना लगा दी थी, उस पे वो पैसे बना रहे थे। आई मीन, और उसको बीच नाम में दे दिया था कि एनवायरनमेंट के फेवर में है, ये इसलिए हमने किया है, हालांकि वो रीजन बीच में पीछे कुछ और थे। I had to send someone money and मैं भूल गई कि मैं रात से भेज सकती हूँ। मतलब उनके पास रात था और मैंने तब भी रात से नहीं भेजा, एंड मेरे पैसे लगे, मेरे अराउंड ₹80 लगे, एंड आई वाज रियली अनोयड कि मतलब जब उस बंदे के पास भी रास्त है और मेरे पास भी रास्त है, या तो मेक इवन इफ आई एम सेंस। डूइंग IBFT तो वो ऑटोमेटिक रास्त होना चाहिए। तो एक ये चीज थोड़ी है। एक ग्लिच है उसके अंदर, बट अभी नई चीज है, हो जाएगा। अच्छा या अरीबा, अब इस पे आते हैं कि ऐसी हमने काफी बात कर ली कि क्या चीज़ उन्होंने की है। हम जजमेंट कोई नहीं देंगे कि अच्छी हैं या बुरी हैं। हमारे ओपिनियन हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट लेट द पीपल जज इट। मुझे बताएं कौन से ऐसे इश्यूज हैं जहां आपको लगता है कि ही कुड हैव डन बेटर, या ही मे बी हैव लेफ्ट देम अनफिनिश्ड। जैसे FATF ग्रे लिस्ट का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान निकल नहीं पाया, हालांकि बड़े स्टेट बैंक ने बहुत मेजर्स लिए उसके हवाले से। हवाला हुंडी पे क्रैकडाउन था, बॉन्ड इन्होंने बंद कर दिए, 40,000 25,000 वाले, 15 7,500 वाले, काफी मेजर्स लिए जो नजर आ रहा था कि उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन नन ऑफ देम सक्सीडेड। हो सकता है कि सो अब हो जाए आगे जाके, जो रजा बाकिर के दौर में जो मेहनत की गई इसका फायदा हो जाए, बट अगेन कौन सी चीजें जो वो अनफिनिश छोड़ गए हैं या बेहतर कर सकते थे, जिसमें ग्रे लिस्ट हो सकती है तो कि नहीं निकले उससे बाहर? फैक्टिव फैक्ट यस। नहीं, फैक्टिव की ग्रे लिस्टिंग से अब उनका कोई लेना देना नहीं। आई थिंक द लास्ट स्टेप दैट दे वांटेड वाज few terrorists को arrest, and I'm not really sure about this. So the fact that grey listing is something that is a really political and international relations driven thing. And I think the state bank has done everything in its mandate वो to हमें address this ब्लैकमेल करने के situation. लिए यूज की जा रही है, FATF लटका के रखा हुआ है God तलवार हमारे knows. सर पे। God knows, but the state bank has done everything in the mandate. In fact, not just everything in the mandate. Pakistan banking is super difficult because of FATF. So, अगर ये इशू एड्रेस हो सकता होता तो अभी तक बैंकिंग पाकिस्तान से आसान हो चुकी होती। तो एक ये इशू है, और फैक्टिव के रहते हुए भी उन्होंने ऐसा इतने आसानी से कि बाहर से पैसे आए और इन्वेस्टर्स को ये यकीन हो कि वो बाहर से पाकिस्तान से निकाल सकते हैं, उन्होंने वो they worked on that as well. If we talk about what he left incomplete, then there's nothing that is left incomplete because these things will continue happening. मतलब ये जो process initiate हुए हैं, these will continue happening. तो for instance, if he came in on day one, तो उन्होंने भी पिछले गवर्नर के कुछ प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू किए होंगे,
और अब वो जो प्रोजेक्ट्स छोड़ के जा रहे हैं वो अगले गवर्नर कंटिन्यू करेंगे. तो it's like this is like regular practice. It's not like he was sent in day one पे कि ये 10 प्रोजेक्ट्स हैं आपको ये कंप्लीट करना है, 10 प्रोजेक्ट्स के बाद जब आप जाएंगे तो आपसे वो किया जाएगा. हाँ ये है कि during his tenure we did not see low inflation. During his tenure we saw growth though, but लेकिन एक्सचेंज रेट बहुत वोलेटाइल रहे. आई मीन अगेन देयर वर फैक्टर्स बियॉन्ड हिज रीच और हिज डोमेन, बट मैनेजमेंट के हिसाब exchange से भी rate देखा जाए एकदम से ऊपर नीचे. और वेल वी कैन गिव हिम exchange rate सम volatile बेनिफिट कि रहा. हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं थे कि वो बहुत कंफर्टेबली उसको कंट्रोल कर पाते नहीं डिसऑर्डरली कंडीशन. exchange rate volatile रहा, but I think that after the COVID rush, जब वो stable रहा, that is something that we should judge him on, which was really appreciated. कि exchange rate हमारा 150s I think and the stable रहा, despite massive devaluation or despite minimal interventions. So I think that is something that I would appreciate. However, उसके बाद जो shock आया, so again, state bank can only absorb shocks to an extent. लेकिन जब external shocks आते हैं तो it's really difficult to mop up with interest मेजर टूल rates इज ऑब्वियसली योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. जब वही आपके पास नहीं होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन कंट्रोल. अच्छा मुझे ये बताएं कि डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के हवाले से भी ये काम कर रहे थे, उस पर क्या प्रोग्रेस है? बिकॉज इधर यहाँ पे बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ चुके हैं यहाँ वेस्ट के अंदर, और डिजिटल बैंक्स जो है digital उनकी banking वैल्यूएशन जो है license. ज़्यादा है, और उन्होंने लाइफ आसान digital कर दी है बड़ी लोगों की. digital banking license के last date था, so they started taking applications and I think March 31st for last date था. I'm not sure about the date. So they were going through the applications and they're going to announce it. उन्होंने ये नहीं बताया था कि कब announce करेंगे. तो this was an initiative led under him. तो उन्होंने, but of course since he's not governor, so he's not the one that is announcing it. So the next governor जो भी आएंगे, he's going to go through the applications whatever, and then they're going to announce the licenses. तो अभी initial stage पे कुछ licenses होंगे, फिर next stage पे वो जो licenses देंगे they'll be even more expensive. So that's a really good initiative. So I'm looking forward to it because financial inclusion इससे बढ़ेगी. और थोड़े से banks को tough देखें, अभी जो existing banks हैं, they're already applying for licenses, और chances हैं कि उनमें से एक दो को मिल भी जाए. But the purpose is that now banks will feel the heat and pressure कि we have to compete with these new kids on the block. तो एक ये issue है which is really exciting. यार काश मेरे पास इतने पैसे होते. नहीं, यहाँ तो बड़े यंग लड़के हैं जो जिन्होंने बैंक्स लॉन्च किए 8 साल पहले, 5 साल पहले, और अब वो इतने बड़े बैंक्स हो चुके हैं, कन्वेंशनल बैंक्स को थ्रेट करें. अच्छा मैं आपसे एक और सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सी रज़ा बाकिर लीविंग? आई एम प्रीटी सर्टेन ही इज लीविंग एज अ वेरी पॉपुलर गवर्नर. बहुत पॉपुलर तो है ये, इसमें कोई शक नहीं, और वैसे भी पीटीआई बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है, बट क्या हाँ He's leaving as one of the most popular governors. मतलब yeah, but क्या powerful? Is a very boring position. And do you also think that he's also leaving as one of the most powerful and say, if I may say, successful governor, या फिर आप कहते हैं कि debatable है? Governor State Bank is a very boring position. सही है. And when I say boring position, I mean कि एक आम बंदे को ना गवर्नर का नाम तक नहीं पता होता. Alright, एक आम बंदे को पता भी नहीं होता कि गवर्नर दिखता कैसे है. But Reza Baqir has changed that to an extent because when he came into power, when he came into office, he has a different way of doing things, and he has a younger way of doing things. So a conventional approach to state bank, of course, state bank is conservative. By nature, a state bank is conservative. It's serious. It's down to business. Reza Baqir was very approachable and he was very communicative. So the state bank's way of communicating with people had changed. And then to make the state bank more personal and more human, personally more human, they added his face to it. And when I say they added his face to it, I mean he came out publicly to talk about initiatives. और he became a media personality. अब वो TV talk shows पे भी आने लगे. ज़्यादा ही हो गया था मेरे ख्याल में एक point पे, तो कुछ मेरे ख्याल में politics भी शुरू हो गई थी. थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था. But also at that, what that made is that it made the state bank for mainstream. कि आम बंदा भी state bank को follow करने लगा, which is I think that's interesting.
But also central banks around the world have also changed. Jamaica के central bank ने एक गाना निकाला है inflation के ऊपर. Indonesia के central bank I think TikTok पे आ गया है. तो central banks around the world have changed. जो पहले बंदे लोग serious होते थे, that has changed. एक काफी change आया है हमारी दुनिया के अंदर. So I feel that Reza Baqir has changed, and I think the next governor will follow his footsteps. Probably not be as media savvy as him, but will be approachable and communicative. Approachable and communicative hona is important. Reza Baqir, if he had the reason why the government may not have continued with Reza Baqir is because he was a very staunch believer in a market-oriented exchange rate. जो कि उन्होंने बहुत दफा ये बात बोली है. If our exchange rate can survive COVID, one of the world's biggest shocks, it can survive anything. And he said this so many times. मुझे रट गया है, बहुत लोगों को रट गया है. And he was right. The currency could withstand COVID, a major shock. So he is a very big proponent, a very big activist on market-oriented exchange rates. जो कि ये PMLN government नहीं है. So if Reza Baqir would have continued, उनसे थोड़ा सा बोला जाता रुपये में intervention करने के लिए बार-बार, जो कि वो नहीं करना चाहते, जो कि इस government के against जाता. So I don't think it would be good on their part. However, it was heard that Mifta Ismail wanted Reza Baqir to continue. Shahbaz Sharif and Ishaq Dar, the old boys club, they did not want him to continue. Okay. So there's that. अच्छा, he was very approachable. You said, और आपने इंटरव्यू भी किया, I think एक से ज़्यादा मर्तबा किया. Twice. तो twice. एक दफा profit के लिए, एक दफा Deal Street Asia के लिए. So the profit one was about macroeconomy, and the Deal Street Asia one was about digital banking licenses, or ये startup space के बारे में था. So that's basically really good because आपने दोनों different aspects cover किया. मुझे बताइए कि जब आप इंटरव्यू कर रही हैं या उनसे कन्वर्सेशन करती हैं, तो उसमें जो obviously not everything went well during this time, चीज़ें बहुत ज़्यादा volatile रही in terms of inflation, exchange rates and monetary policy. क्या उनकी तरफ से कोई डिफेंस आपको मिला, जो उन्होंने कहा, कोई वजाहत दी हो कि कुछ challenges आए internally? He has one famous line, and his line is, "Central bankers do not have crystal balls." His exact words. So they can't tell the future. But ये तो फिर हर चीज के against defense हो जाएगा ना? ये तो फिर हर चीज के against हो जाएगा. उनकी ये defense है कि अभी जो situation के हिसाब से हम decisions लेते हैं, or again extraordinary circumstances जहाँ पे everything is unpredictable, तो उस हिसाब से ये said कि हमने जो decisions ली थी, हमें नहीं पता था कि इतने monetary supply increase हो जाएगा, but over time when we realized it, हम mop up करने लग गए थे liquidity. तो that is this thing. तो एक ये है, एक कभी कभार स्टेट बैंक प्रोएक्टिव हुआ है, कभी कभार रिएक्टिव हुआ है, तो it depends on that. जैसे कोविड के दौरान स्टेट बैंक प्रोएक्टिव था, अभी स्टेट बैंक रिएक्टिव हो रहा है. मार्केट की यील्ड्स को देख के तो स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट रिएक्टिव है, पहले स्टेट बैंक प्रोएक्टिव था. तो it's kind of interesting के what's going on, but again क्योंकि इतने uncertain times हैं कि it's a little confusing. Anything can happen. I mean, even with the Fed, people are pretty pissed off. और लोगों ने बड़ा जो है, इनफैक्ट मैंने भी एक दो फीचर्स लिखे, नजर आ रहा है कि फेड के भी वही इश्यूज आ रहे थे. तो सेंट्रल बैंक फिर अगेन वो भी यही कह सकते हैं, हमारे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है. बट देन अगेन ये आई मीन इसको एक्सक्यूज भी कह सकते हैं. इट कुड बी रैशनल एक्सप्लेनेशन टू सम एक्सटेंट, बट अगेन जो रेपरकशंस होते हैं व्हेन जो सेंट्रल बैंक अगर कोई चीज गलत कर दे, इफ दे गेट अ डिसीजन रॉन्ग, they get a policy measure not going the way it should have, it can have devastating impact on the economy. Anyways, but alhamdulillah aisa koi decision nahi hua that has negatively impacted severely, but because that is also because my economy is financially inclusive nahi hai, so isliye itna koi wo nahi pada. But if we were to say 3 years as governor, jiske andar the first year was reserve crisis and inflation crisis, and the second year was COVID crisis, and the third year was COVID recovery and commodity crisis के हिसाब से I think so we are back to the reserves crisis again, like फिर bailout की तरफ चले गए, सारी चीजें ऐसा लग रहा है, इन्फ्लेशन भी हाई, चीजें ऐसा लग रहा है वापस आ गई है, उधर बूम एंड बस्ट साइकिल वाली बात आ जाती है. We're back to that crisis, but like if I were to say, the 3 years that he's been governor have been one of the most craziest 3 years of our lives. Like these are the 3 craziest years, full stop.
So he's had a tough job as governor, but he's leaving as one of the most famous governors of Pakistan. I think the other most famous governor in Pakistan would either be Ishrat Hussain or Shamshad Akhtar. But Ishrat Hussain Chalo is also a household name because of his government positions. Um, so yeah, so the other two people I can think of that were famous, and Ghulam Ishaq Khan. Acha, Ariba, I think let's wrap up the discussion with the Yes. obviously one obvious question. Uh, Whoever is coming in, whether it's Asim Hussain, as you said, the name being proposed, या कोई और जो भी गवर्नर आते हैं, what are the 2 or 3 major challenges that he has to take up? क्या उनके सामने बड़े challenges हैं आपके सबसे ख्याल में? सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, ये PMLN की हुकूमत में रहते हुए मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट के प्रोपोनेंट होना, टू encourage it. Ishaq Dar went on TV a few days ago and said real effective exchange rate कुछ नहीं होता. ऐसे नहीं, लेकिन Ishaq Dar ऐसे had this cushion of like $18 billion in reserves. तो वो तो अफोर्ड कर सकता था. इनके पास अब जो आएगी yeah, हुकूमत, but like my point is that ऐसी हुकूमत के रहते हुए it's going to be very difficult for them to encourage a market oriented exchange rate. And then plus another thing is that अभी जो regime change हुआ है उसकी वजह से अब जो नई government आई है, they will want to show people कि देखे हम, they will want to spend इलेक्शन government आने वाले expenditure फौरन को इसलिए. हाँ जी, government expenditure उनको बढ़ानी होगी, but interest rates are really high right now, so तो and ये central bank आपको cannot लगता है spend in कि government. जो गवर्नर आ रहे हैं वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे कि वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, इंटेग्रिटी और एज No, ऑटोनोमस बॉडी स्टेट बैंक, ये सारा साइड पे रख के, और जो पॉलिटिकल डिसीजन है कि अगले no, इलेक्शन के हिसाब से no. सीटें उन्हें वो So लेंगे? when I'm saying it's going to be difficult for the central bank, it's going to be difficult to work in harmony. Say so central bank autonomous independent hai. But it'll be difficult to work in harmony with them because government के साथ आपके हर वक्त clash होते रहेंगे, तो एक air of difficulty होती है. तो in keeping that in mind, एक ये issue है. Globally as well, एक issue ये है कि globally interest rates are also on the rise. तो पाकिस्तान को एक interesting market बना के, for instance for bonds, and इसके अलावा उसको बनाना, it will be a little challenge as well.